Welcome to EduBridge IAS. In the last class, we had started our discussion on the art and culture of the Harappan civilization, and today we are going to continue with the same. So, in the previous class, we had covered the topics of town planning, stone sculpture, metal casting, and terracotta figures. And beginning from seals, we are also going to cover pottery, beads and ornaments, and textiles. तो सबसे पहला टॉपिक हमको देखना है हड़प्पन सील्स के बारे में. A few facts about these seals. Thousands of them have been discovered from different parts of the Harappan civilization from various sites. Most of these seals are made out of statite. Statite क्या है? I had told you in the last class, it is a kind of soft river stone. But other materials such as agate, chert, copper, faience, terracotta, gold and ivory have also been used. ठीक है. अच्छा, the standard Harappan seal was 2 square inches. In which shape? Either it was square or rectangular and made in statite. The reverse has a perforated boss. तो जैसे स्टैम्प में हैंडल होता है उसको बॉस बोलते हैं. तो यहाँ पे जो हरप्पन सील्स में बॉस है दैट वाज परफोरेटेड. इसमें एक होल था. तो इट प्रोबेबली इंडिकेट्स दैट इट वाज वो देयर इन ऑर्डर टू सिक्योर इट. जैसे आजकल आइडेंटिटी कार्ड्स में एक स्ट्रिंग होता है जिसको लैनियार्ड बोलते हैं, उस तरह का यहाँ पे भी कोई डिवाइस रहा होगा, गले में लटका करके घूम सकते हो ताकि आसानी से खो ना जाए. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस some seals and copper tablets are also oval in shape, right? अब इन seals पे कुछ carvings हैं. These are intaglio carvings. What are intaglio carvings? कि seal के surface पे कुछ depressed carvings हैं. So there are two different kinds of carvings. One is intaglio carving and the other is embossed carving. Intaglio carving ये होता है कि प्लेन सरफेस से अगर मटेरियल रिमूव किया जाए सो दैट द बैकग्राउंड इज रेज्ड बट द इमेज इज रिसेस्ड और डिप्रेस्ड इनटू द मटेरियल, दैट इज नोन एज इंटैग्लियो कार्विंग. एम्बॉस्ड कार्विंग क्या होता है? दैट इज रेज्ड कार्विंग. ये जो एक्चुअली इमेज होती है वो रेज्ड होती है और जो बैकग्राउंड होता है दैट इज रिसेस्ड. तो यहाँ पे इंटैग्लियो कार्विंग्स होती है. क्या क्या किन की चीज की कार्विंग्स होती थी? हरप्पन स्क्रिप्ट होता था और images of animals, plants, human figures, and mythical creatures. Right. Most common motifs found from the Harappan seals include the bull and the unicorn. So bull, which is both humped and humpless. तो hump और hump बिना hump के bull दिखाया गया है and unicorn भी पोर्ट्रे किया गया है. Unicorn is a mythical creature like a horse जिसके एक horn होता है सर पे. Right. So these are some of the characteristics of these seals. What was their function? So they acted as a mark of ownership, authority or guarantee against tampering. So for example, किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने गुड्स को एक पॉट में प्लेस किया है एंड ही इज ट्रांसपोर्टिंग इट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट. सो जैसे आप अभी देखते हो कि ऑन वेरियस गुड्स एक ब्रांड का लोगो होता है, तो इट एक्टेड एज दिस काइंड ऑफ अ लोगो. तो उसके ऊपर एक मुहर लगा दी जाती थी एंड दैट वुड help to identify the manufacturer. It also acted as a guarantee against tampering. For example, water bottles में seal होता है. अगर seal टूटा होता है so that means it is not fit for consumption. There may have been some adultery with it. So in order to reassure the buyer or consumer that the contents of the jar have not been tampered with, एक seal लगाया जाता था which if intact would tell the buyer कि इसके साथ कोई tampering नहीं हुआ है. अच्छा, these seals facilitated long distance trade. जो हरप्पन seals हैं they have been found from far off places including the Persian Gulf and some Mesopotamian sites. So Harappan seals have been found from Mesopotamia and Mesopotamian seals have also been found from Harappan sites. So this tells you that there must have been some kind of exchange, mutual exchange between these civilizations. Mesopotamian records जो हैं, which have been deciphered, stone tablets इन्होंने लिखे थे, they refer to trade relations with a place known as Meluha. Meluha was probably the ancient name of the Indus Valley civilization or Harappan civilization. These records also mention trading links between Meluha and Tilmun.
which was the ancient name for Bahrain, and Magan, which was the ancient name for Oman. अब बहरेन और ओमान से भी कुछ हरप्पन सील्स डिस्कवर करी गई हैं. So this again reinforces the fact that some kind of trade was happening between these places, right? Copper tablets appear to have been used as amulets. तो amulets क्या होते हैं? जैसे ताबीज आप लोगों ने देखा होगा. It is usually worn for luck or for keeping away bad spirits. Lucky charm होता है. तो उस तरह की practices भी यहाँ पे देखने को मिलती है. अच्छा, seals could also have functioned as proof of identity. So they were the ancient analog for the modern day identity cards. It could have been used to establish the identity of the bearer, right? अच्छा, अब इन सील्स पे स्क्रिप्ट भी मिली हुई है, तो स्क्रिप्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लीजिए. हरप्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट ओनली बीन फाउंड फ्रॉम हरप्पन सील्स, इट हैज आल्सो बीन फाउंड फ्रॉम पॉटरी, ज्वेलरी, बोन्स, आइवरी, साइन बोर्ड्स, एटसेट्रा, राइट? तो इतनी सारी जगहों से अगर स्क्रिप्ट मिला है, यानी कि जो लोग इसको यूज कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने इसे बनाया है, they were probably aware or they were probably literate. So this indicates that literacy was probably widespread. The script itself is pictographic and logosyllabic. Pictographic का मतलब that instead of alphabets, the script consists of symbols and pictures. And logosyllabic का मतलब that each symbol denotes or stood for a syllable or a word. तो एक sound या word को एक symbol से denote किया जाता है. The script consists of more than 400 symbols and it remains undeciphered. We do not know how to read the Harappan script, and therefore the Harappan civilization has been characterized as a proto-historic civilization, right? However, we do know a few characteristics about the Harappan script, namely that it was written from the right to the left. जैसे कि उर्दू, फारसी, अरबिक, ये सारी लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. The Harappan script was also written from the right to the left in the Boustrophiedon style. देखो, most of the Harappan symbols or sorry, Harappan inscriptions are very short. Their average length is roughly 5 to 6 characters, right? So they have been written from right to left. But कुछ inscriptions थोड़े लंबे हैं. They may be 2 or 3 lines long. तो बूस्ट्रोफिडॉन का मतलब क्या होता है कि पहली लाइन राइट टू लेफ्ट लिखी जाएगी, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट लिखी जाएगी और तीसरी लाइन राइट टू लेफ्ट वंस अगेन लिखी जाएगी, राइट? सो दिस इज नोन एज द बूस्ट्रोफिडॉन स्टाइल ऑफ राइटिंग. अब हमें पढ़ना तो आता नहीं है, सो हाउ डू वी नो कि इस तरह से स्क्रिप्ट लिखा जाता था? सो इट इज वेरी इजी टू गेस कि ऐसा होता होगा. सो व्हेन एन आर्टिस्ट स्टार्टेड इंस्क्राइबिंग दीज सील्स, तो उसने पहले तो बड़ी फुर्सत में अपने कैरेक्टर्स बनाने शुरू किए, खूब सारा स्पेस छोड़ के. बट टुवर्ड्स द एंड ही रियलाइज दैट ही वाज शॉर्ट ऑफ स्पेस एंड सम cramming of characters started happening. Then the again second line also, in the beginning there was lots of space and after that there was very little space. Third line the same thing was visible, right? So राइटिंग का लैंग्वेज डायरेक्शन एस्टैब्लिश किया गया इस तरह से. एट फर्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट, सेकेंड लाइन लेफ्ट टू राइट एंड थर्ड लाइन राइट टू लेफ्ट वंस अगेन. So it appears as if a snake is winding, right? तो इस वजह से इस स्क्रिप्ट को स्नेक स्टाइल स्क्रिप्ट भी बोला जाता है. जिस तरह से स्नेक प्रोपोगेट करता है उसी तरह से ये भी स्क्रिप्ट भी लिखी जाती थी. अच्छा, Harappan script, although it is undeciphered, it most closely resembles the script of the Gonds. Gonds are the largest tribal group of India, primarily living in central India. जो इनकी script है, it has a number of similarities with the Harappan script. Most common symbols in the Harappan inscriptions are the fish symbol, jar symbol, and marker symbol. Right. So on your left, on your right, you can look. These are some of the characters of the Indus or Harappan script. And धोलावीरा से कुछ साइन बोर्ड्स मिले हैं ऑफ लार्ज साइज. तो उनमें से एक साइन बोर्ड में इस तरह के सिंबल्स अरेंज थे फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट.
अब we do not know what these symbols said, लेकिन इसके अलग अलग interpretations निकाले गए. Another very important seal is the Pashupati seal. क्या है ये? It is a statite seal with a human figure, possibly having 3 heads or 3 faces, wearing an elaborate headdress with horns, seated in a cross-legged yogic posture, and he is surrounded by animals. तो इसको इंटरप्रेट किया गया है that he is the lord of animals और पशुपति. तो इस सील का नाम पशुपति सील रख दिया गया. अच्छा, what are the animals? There are 4 animals: an elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo. Elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo. And below his throne or seat, there are 2 antelopes or 2 deers with horns. Right? So total 6 animals hai, but 4 animals on his side are elephant, tiger, rhinoceros, and buffalo with 2 antelopes below his throne. Right? Now, इस सील के इंटरप्रिटेशन में एक हिस्टोरिकल डिबेट है. तो डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव इंटरप्रेटेड इट डिफरेंटली. Earlier historians identified the figure as Proto-Shiva. Other historians later identified it not as a male but a female deity. Further, a few more historians said that it was neither Proto-Shiva nor a female deity. Rather, it was a shaman or a tribal spirit doctor or spirit guide who communicates with the other world. राइट. तो इस तरह के डिबेट्स कैसे अराइज होते हैं, तो उस पर देख लीजिए कि प्रोटोशिवा को का इंटरप्रिटेशन कैसे आया. कि ऋग्वेद में एक गॉड का नाम है दैट इज रुद्रा. he was later identified during the Puranic period, that is the Gupta period, as Shiva. Right? तो शिवा को ही रुद्रा का इनकारनेशन माना गया और रुद्रा was taken as an incarnation of Shiva, but this came later during the Puranic period. Right? However, in the Rig Veda, Rudra was neither depicted as Pashupati nor as a yogi. लेकिन शिवा को पुरानिक लिटरेचर में ये एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं. Further, it is a common practice to depict Shiva having multiple heads, at times 3 heads or more commonly 5 heads. तो जब पशुपति सील को जॉन मार्शल ने पहली बार स्टडी किया, he came to the conclusion that it was a depiction of the proto imagination of Shiva, that all of the characteristics identified with Shiva had not emerged, but this kind of iconography existed during the Harappan period. Now, this has been challenged because of the break in continuity between the Harappan belief system and the Vedic and Puranic belief systems. Right? अब इस तरह की difficulties arise क्यों होती हैं? Because sometimes, in order to recreate the unknown past, historians and archaeologists have to rely on the known present, and they tend to draw parallels between present day traditions and the past traditions. So later day traditions can sometimes be mistakenly attributed to the past if archaeologists look at it through the present. So this was the coverage of the little debate on the interpretation of the Pashupati. अच्छा, ये तो हो गया हमारा डिस्कशन ऑन दी हरप्पन सील्स. नाउ वी हैव टू डिस्कस दी हरप्पन पॉटरी. राइट. सो हरप्पन पॉटरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. पहला, इट इंडिकेटेड एफिशिएंट मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन मतलब कि इट वाज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री. इसको एक सेंट्रल लोकेशन पे इन द फॉर्म ऑफ एन इंडस्ट्री मास प्रोड्यूस किया जाता था. इसका कोई एविडेंस मिला है? तो इसका एविडेंस है कि अपड्राफ्ट किल्स हैव बीन फाउंड एट सेवरल साइट्स सच एज मोहनजोदारो, हरप्पा, चानुदारो एंड नौशारो. किल्स क्या होती थी? तो एक तरह का फर्नेस या भट्टी है जहाँ पे इन पॉट्स को बेक किया जाता था कच्चे से पक्का बनाने के लिए. राइट. अच्छा, व्हाट इज दिस अपड्राफ्ट किल? तो इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ किल जिसके ऊपर एक चिमनी, फनल शेप्ड चिमनी होती थी. तो इट वाज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, बट फायर नीड्स सम एयर इनलेट. तो ये एयर इनलेट कहाँ से बनाया जाता था? तो जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता था और यहाँ पे ही फ्यूल को भी डाला जाता था, एंड इट वाज हियर दी that the air came in. Right. So very high temperatures in very short time could be reached, and it was easier to control the temperature which was obtained with the use of these kilns. So, ऐसी kilns मिली हैं. So this indicates that
pottery was mass produced, right? Most of the Harappan pottery was wheel made or wheel turned. हैंडमेड पॉटरी नहीं बनाते थे या फिर बहुत कम बनाते थे. बोथ यूटिलिटेरियन एज वेल एज डीलक्स पॉटरी हैज बीन फाउंड. यूटिलिटेरियन मतलब जो एवरीडे यूज के लिए पॉटरी होती है, फॉर एग्जांपल कुकिंग वेयर, स्टोरेज जार्स, वेसल्स फॉर स्टोरिंग वाटर और पोरिंग वाटर, गॉबलेट्स एक्सेट्रा. तो ये यूटिलिटेरियन पॉटरी हो गई. एंड डीलक्स वेयर्स, तो सम शो केसेस और परफ्यूम बॉटल्स, तो इस तरह की पॉटरी जो हो गई डीलक्स वेयर हो गई. दोनों तरह की पॉटरी हमको हरप्पन कॉन्टेक्स्ट से देखने के लिए मिलती है. अच्छा, हरप्पन पॉटरी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय graceful curves rather than straight or angular lines. So angular lines linear pottery was not the norm. The norm was uh, curvilinear pottery in the round form. Is that clear? ये याद रखिएगा. Harappan pottery of various shapes have been discovered, such as bowls, dishes on stand, S-shaped jars, plates, storage jars, cooking pots, goblets, beakers, jars with conical base, knobbed ware, miniature vessels, perforated jars which were probably used for straining liquor, etc. So you can look at this image. तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ पॉटरी देखने के लिए मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ कोनिकल जार विद अ कोनिकल बॉटम. इस तरह के जार्स प्रोबेबली लॉन्ग डिस्टेंस शिपिंग के लिए यूज किए जाते थे. तो इनमें ग्रेन्स, सम ड्रिंक एक्सेट्रा भरा जाता था, ऊपर से सील किया जाता था, एंड दे कुड बी इजिली स्टोर्ड एट द बॉटम ऑफ द शिप विच वॉज पॉइंटेड. जो कील होता है दैट इज पॉइंटेड, तो वहां पे इसको आसानी से स्टोर कर सकते थे. देन यू कैन लुक एट दिस पॉटरी, दैट ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर कोई डिश रखा जाया गया होगा. दिस इज अ ring shaped disc. ये perforated pottery है. This was probably used for straining liquor. The Harappans had both unpainted as well as painted pottery. कुल्लर टाइप के कप्स होते थे यहाँ पे. These were goblets. So this is a practice जो आपको अभी भी देखने के लिए मिल जाता है. So it is a practice which may have continued to present times. Right. Now आगे देखिए. प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन दैन दी पेंटेड वेयर. तो पेंटेड वेयर भी था, प्लेन वेयर भी था, बट प्लेन पॉटरी इज मोर कॉमन. किसका बनता था ये? इट वॉज मेड ऑफ रेड क्ले, एंड इसके ऊपर कभी कभार एक रेड या ग्रे स्लिप भी चढ़ाया जाता था. तो स्लिप क्या होता है? इट इज द सिरामिक सस्पेंशन इन वाटर. तो मान लीजिए कोई सिरामिक सब्सटेंस होगा, फॉर एग्जांपल क्ले, जिसको वाटर में डिसॉल्व किया गया है, एंड पूरे पॉट को बेक करने के बाद इसमें डिप कर दिया जाता था, एंड उसको बाहर निकाल के दोबारा से बेक किया जाता था. दैट वुड लीव अ ग्लेज अराउंड द पॉटरी. तो इसको स्लिप बोलते थे. इट दीज पॉट्स वर मोर इम्परवियस, यानी कि इनकी पोरोसिटी कम हो जाती थी. दे वर ऑल्सो मोर ड्यूरेबल, तो आसानी से डिसइंटीग्रेट नहीं होते थे. अच्छा, तो जो अनपेंटेड पॉटरी था, दैट कुड बी इधर बफ कलर्ड पॉटरी और रेड स्लिपवेयर और ग्रे स्लिपवेयर. बफ कलर्ड पॉटरी जिसपे स्लिप नहीं चढ़ाया जाता था, रेड स्लिपवेयर जिसपे रेड स्लिप चढ़ाया जाता था, और ग्रे स्लिपवेयर जिसपे ग्रे स्लिप चढ़ाया जाता था. राइट. अच्छा, पेंटेड पॉटरी टिपिकली इंक्लूडेड black and red ware pottery. So why is it called black and red ware? Because geometric designs and patterns of animal figures and patterns of animal figures were painted in glossy black paint over a bright red slip. तो पहले पॉट को बेक किया जाता था, उस पर ब्राइट रेड स्लिप चढ़ाया जाता था, एंड देन ग्लॉसी पेंट, ब्लैक पेंट से उसके ऊपर कई सारे डिजाइन बनाए जाते थे. So these are some of the painted motifs. You can look at these. The painted decorations include horizontal lines, lattices, intersecting circles, fish scales, palm and people leaf patterns, birds, fishes, animals, etc. Right. Now, there were some extremely rare luxury items which were used by the Harappans as well. These could only have been used by the extremely rich because they were very rare and time consuming to make. They included glazed pottery.
glazed pottery क्या होता है? It is an impervious layer of a vitreous substance. What is vitreous substance? Either powdered glass और porcelain enamel, जिसको पॉट के ऊपर पहले लगाया जाता है and powdered form में, and it is then fried. Thus, the glass is fused to the surface of the pot, giving it a mirror-like shine. तो इसको glazed pottery. The Harappans were the first to begin the tradition of making glazed pottery. So glazed Harappan pottery is the earliest example of its kind in the ancient world. Extremely rare, extremely expensive, right? The luxury items also included polychrome ware. So these were small vases decorated with multiple colors patterns, such as red, black and green. White and yellow यहाँ पे बहुत rarely use किए गए हैं. Incised ware also. The base of the pan or pottery was decorated with incisions made using a burin. So burin is a tool with a sharp edge or a sharp mouth. तो जिससे कुछ wet clay पे incisions बनाए जाते थे and then it was fired and set. Miniature pottery, so tiny faience vessels measuring less than half an inch were probably used as perfume bottles. Faience होता क्या है? It is identified as a kind of protoglass. ग्लास बनाने की उस समय टेक्निक नहीं पता थी, बट द हरप्पन्स हैड डिस्कवर्ड दैट अगर ये क्वार्ट्जाइट स्टोन को हाई टेम्परेचर्स पे हीट करेंगे तो दिस मिनरल्स इन द स्टोन मेल्ट एंड लीव अ ग्लॉसी मिरर लाइक फिनिश. तो और अगर कई सारे कलर्स के क्वार्ट्जाइट स्टोन को एक साथ मिक्स किया तो इट वुड गिव अ मल्टी कलर्ड पैटर्न. दिस वाज फेयंस. इसके भी वेसल्स बनते थे, right? Harappan pottery has also been found in Bahrain and some other coastal sites in the Persian Gulf. So this indicates that they traveled over long distances. Some pots also have paintings of ships and boats. तो इसका मतलब Harappan pots were also involved in foreign trade. Large pots with conical bases were used for transporting goods over long distances. Some such pots also have seal impressions. So this is an example of such a pot. Harappan pottery has also been found from graves. This indicates that the Harappan believed in the concept of life after death. And pots में कई कुछ materials रखते होंगे that which could be enjoyed after the person has died. Now let us look at the Harappan bead and ornaments. So the Harappan, the tradition of wearing jewelry was popular among both men and women. ऐसा नहीं है कि केवल women jewelry पहनती थी. Both men as well as women used to wear jewelry. किससे बनती थी ये jewelry? Precious metals, semi-precious stones, ivory, bone, faience, statite, etc. अच्छा, men और women किस तरह की jewelry पहनते थे? Men and women wore necklaces, fillets, armlets, and finger rings, and only women wear girdles, earrings, and anklets. Okay. Acha. Hoards of Harappan jewelry have also been found at Harappa, Alladino, and Lothal. तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आ सकता है that which of these following Harappan sites have yielded hoards of jewelry. So the answer would be Harappa, Alladino, and Lothal. Harappa कहाँ पे है? पंजाब, पाकिस्तान. Alladino, it is a small village near Karachi in Sindh, and Lothal is in Gujarat. तो यहाँ से hoards of jewelry मिले हैं. Bead making had been known in earlier cultures. तो bead making प्री हरप्पन ट्रेडिशन था, बट हरप्पन्स ने यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए. दे इंट्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स, न्यू मेथड्स एंड न्यू स्टाइल्स ऑफ बीड मेकिंग. न्यू मटेरियल्स कौन से यूज करने लग गए? कार्निलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, टर्कोइज, लापिस lazuli, bronze, gold, silver, shell, faience, terracotta, etc. So a proliferation of semi-precious stones and metal, right? They also introduced a new kind of cylindrical stone drill made of a new material. This material is known as ernestite. It is named after the archaeologist who first discovered these new kind of stone drills. Ernestite होता क्या था? It is an extremely hard and durable material
obtained from a rare metamorphic rock, and it was heated to high temperatures in order to harden it. Right? So अर्नेस्टाइट के सिलिंड्रिकल स्टोन ड्रिल्स हड़प्पन्स ने अपनी लैपिडरी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस की. अच्छा, बीड फैक्ट्रीज कहाँ से मिली हैं? फ्रॉम चानुदारो एंड रुथिल. तो बीड फैक्ट्रीज हैव बीन फाउंड एट चानुदारो एंड रुथिल. Harappan long barrel cylinder beads of carnelian have been found from royal burials in Mesopotamia. So these beadworks were, or these Harappan jewelry were so beautiful and so valuable that they were transported over long distances, and they have even been found from the royal burials of Mesopotamia. अब आप इस इमेज में देख सकते हैं, there is an image of a girdle or waistband found from अल्लादीनो. तो इसमें हर एक बीड को बनाने के लिए a skilled artisan needed over 3 days, and this entire work would have been completed only after and 1 year of intense work from skilled artisans. So you can imagine कि it was so labor intensive and इसका वैल्यू कितना ज्यादा रहा होगा. बट ऐसा नहीं है कि the poor people or the ordinary people did not wear jewelry. They wore what is known as imitation jewelry. तो अभी भी आप देखते हैं, एक तो सॉलिटेयर होता है और दूसरा आर्टिफिशियल डायमंड्स होते हैं. तो जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं वो आर्टिफिशियल डायमंड्स पहनते हैं. उस समय भी जो कार्निलियन बीड्स को नहीं अफोर्ड कर पाते थे, दे यूज्ड टू वेयर ज्वेलरी मेड आउट ऑफ टेराकोटा. तो सेम शेप में टेराकोटा की बीड्स को बनाया जाता था एंड उसके ऊपर रेड पेंट चढ़ा दिया जाता था. इट वुड गिव द अपीयरेंस ऑफ अ कार्निलियन बीड. राइट. अच्छा, आगे देखो. हरप्पन्स वर आल्सो एक्सपर्ट्स इन शेल वर्क. Shell objects and ornaments such as bangles were exquisitely carved, and evidence of inlay work on shell objects using gold and silver has also been found. ठीक है, तो बहुत माइन्यूट नक्काशियां करते थे. यू कैन लुक एट दीज वेरियस एग्जाम्पल्स. और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखना, दैट बालाकोट एंड नागेश्वर वर द इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ शेल वर्क. Harappan ornaments have also been found from graves. So it had the same significance as the discovery of Harappan pottery from graves. So this was the discussion on Harappan jewelry and beads. Now we have to discuss Harappan textiles. Right. So Harappans कौन कौन से टेक्सटाइल से अवेयर थे? They were aware of wool, cotton, silk and, ठीक है, तो ये चार नहीं भूलने, wool, cotton, silk and jute. अच्छा, typical Harappan attire consisted of two separate garments, shawl and dhoti, or a shawl and a skirt or kilt. Right. So the Harappans did not used to wear a single garment such as a cloak or a gown. दो पीसेस में अपने क्लोथ्स पहनते थे, such as a shawl and a dhoti. Right. The Harappans were the first in the entire world to cultivate cotton. तो आपने सुना होगा Egyptian cotton is very famous, but the Harappans were the first to cultivate cotton. अच्छा, traces of cotton cloth have been found from Mohenjo-daro and cotton thread has been found from Harappa. So this gives direct evidence of the practice of cotton cultivation and cotton textile during the Harappan period. अच्छा, जो टेराकोटा फिगरीन्स हैं उनमें भी जो क्लोथ्स पहने हुए हैं, that also gives you insights into the Harappan dressing pattern. So they have been shown wearing two separate garments such as shawl and skirts or dhotis, etc. Okay, the Harappans were probably also aware of the spinning wheel. Spinning wheel क्या होता है? It is for spinning cotton yarn. उसका cotton thread बनाने के लिए spinning की technique यूज करी जाती है. One of the items or one of the tools for spinning is the spinning wheel. The Harappans were probably aware of it. How do we know? हमको कोई spinning wheel तो नहीं मिला है, but judging from the uniform thickness of the cotton threads and from the uniformity of the cotton weave, it appears that the Harappans had access to spinning wheels. इसके अलावा various types of spindles have also been discovered. Spinning was an activity that was practiced by both the rich and the पुअर. ये कैसे पता हमें? बिकॉज स्पिंडल वर्ल्स जो हैं अलग अलग मटेरियल्स के हमको मिले हैं. फॉर एग्जाम्पल
फेयॉन्स के भी मिले हैं which is extremely rare and expensive, and clay के भी मिले हैं which is extremely ordinary and inexpensive, right? This indicates that weaving of cloth may have been a cottage industry practiced not only in the villages but also in the cities. तो जो हरप्पन हाउस थे वो अपना कॉटन यान भी खुद बनाते थे और कॉटन के कपड़े भी प्रोबेबली खुद ही बनाते थे, राइट? फर्दर, silk and jute strings have been discovered from beads and jewelry. तो beads या jewelry pieces को एक साथ string करने के लिए silk और jute यूज किया गया है, and these have been discovered as well. यहाँ पे बात कर लेते हैं हरप्पन फैशन सेंस की। दी हरप्पन्स वर एक्सट्रीमली फैशन कॉन्शियस। ये हमको कैसे पता लगता है? फ्रॉम द डिफरेंट हेयर स्टाइल्स एंड बियर्ड स्टाइल्स ऑफ द हरप्पन्स, एंड हरप्पन्स आल्सो हैड द ट्रेडिशन ऑफ मेंटेनिंग वेल groomed beards, right? Harappans also used cinnabar as a cosmetic. Cinnabar is a compound obtained from mercury. लाल रंग का होता है, it could be used as a face paint, lipstick, rouge, etc. Additionally, face paint, lipstick, and eyeliner were also used by the Harappans. So this was the discussion on the Harappan textiles. अब इस पेज पे आप देख सकते हैं, आई हैव मेड व्हाट यू कैन कॉल अ माइंड मैप, फ्लो चार्ट, जो भी मन में आपके बोल लो, बट आई हैव simply summarize the entire topic of Harappan art and culture on a single page. So don't get worried. I will be sharing this image with you later. Thank you so much, and I'll see you again very soon with the next topic. Yeah. Thank you. Thank you very much, Vishal sir. And we have started a daily MCQ on Telegram channel. So rather than asking questions within the class, we'll post you the questions so that you can read them thoroughly and try to attempt them on the Telegram channel itself. So go through the lecture what have been taught by the Vishal sir. So we'll post some questions from ancient history and also some current affairs questions and from other topics. And also we have realized that we have not covered geography and environment and ecology. So in the MCQs, we'll be starting with geography and environment and ecology plus science and tech also. At the same time, we are trying to arrange some classes from geography, environment, science and technology so that the entire syllabus is covered and the important topics are covered before the prelims itself. And also very soon I'll be beginning a special session on government schemes. We'll not be having a very big class of that, just it will be a 5 to 10 minute session so that we discuss some government schemes daily and we have a command over those schemes because every year UPSC is asking at least 2 or 3 schemes and these may give you short answers. Okay, so we'll be coming with it very soon and take good care of yourself. Thank you for joining and continue studying with us. Thank you very much.